Welcome to the Institute for Humanities. Let us take next step towards our preparation for CUET with political science for PG. We are discussing the previous year questions to understand what is the trend and how we should be preparing. Today, I am with another question from 2023, and today's question is on democracy. So it shows that democracy being a very important part of the classical political theory as well as contemporary political theory, students are expected to know various concepts, prominent authors, etc. related to democracy. So now let us see what was the question they have asked in 2023 on democracy. The question has been, okay, the conceptual question, fine. So what we are seeing that there is a greater emphasis on the conceptual question rather than factual question. So now let us understand this. So they are saying that given below are two statements. Statement 1, popular democracy is a form of indirect democracy. So what is indirect democracy? Where people do not directly participate in the formulation of laws. Okay, so indirect democracy means representative democracy, where people are not directly participating. Scholars like Rousseau, what they emphasized on direct participation, and Rousseau was critic of indirect democracy. So, popular democracy. So, you may get confused what is popular democracy, but in political discourse, whenever the term popular democracy means, it means direct democracy. Or you can also say participatory democracy. Who is a prominent thinker here? Rousseau. Fine. So, popular democracy is a form of indirect democracy. Obviously, this statement is bound to be wrong. Fine. Now, the second statement, it presupposes factional or sectional divisions. Now, this is very, very interesting that representative democracy, which is a majoritarian democracy, presupposes factional or sectional divisions. Who is a scholar of representative democracy? Bentham. You know his principle, greatest happiness of greatest number, which is a mathematical principle of counting the different people may have different preferences. But participatory democracy comes from Rousseau's theory of general will. And you must be knowing that Rousseau classifies man's will into two types, the real and the actual will. And what is general will? The sum of real wills, but for Rousseau, it is always bigger than the sum because whole is always more than the sum of its part. So, because real will is common to all, it is a good will, it is always one for all. Hence, the idea of popular democracy does not presuppose factional or sectional divisions. Rather, it always presupposes that people speak with one voice. Now, one more way you can understand popular democracy is, this is Rousseau's concept. So, Rousseau is also famous for concept of popular sovereignty. So, sovereignty means power, democracy means power with the people. So, popular sovereignty से भी, और popular sovereignty का concept क्या है? General will का concept है. तो general will कैसी होती है? Indivisible होती है. अगर indivisible है तो factional और sectional नहीं होगी, यानी ये क्वेश्चन भी गलत है. तो अब क्वेश्चन क्या है? In light of the above statement, we have to choose the correct answer. तो correct तो इसमें दोनों ही नहीं है. इसका मतलब है both statement are true? No. Both statement are false? Correct. Statement 1 and 2, तो no point discussing that. Fine. तो बहुत ही finely आपके concepts clear होने चाहिए, terms पता होनी चाहिए, theories पता होनी चाहिए, तब आप जाकर के
मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सो दैट यू गेट द यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स ऑफ योर चॉइस। तो इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड वी हैव थॉट दैट वी विल गिव यू सम लिटिल मोर आइडिया। तो डेमोक्रेसी में आप पढ़ रहे हैं, आप बेंथम का कॉन्सेप्ट पढ़ें, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जो मेजॉरिटेरियन मॉडल है। ऐसे ही जे.एस. मिल ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रिफॉर्म किया और सजेशंस दिए, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात की कि उसकी पावर बढ़ाई जाए। नाउ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस या पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से आता है, और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है जुर्गन हैबरमास, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के सेकेंड जनरेशन ऑफ स्कॉलर से आता है, और हैबरमास ने दिया है डिस्कोर्स एथिक्स। हैबरमास पर जब भी क्वेश्चन आए तो कुछ की टर्म्स है। पहला आइडियल स्पीच सिचुएशन, कम्युनिकेटिव एक्शन, आप इसको पढ़िए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी में। राइट, सो बिसाइड्स दिस some other persons associated with कैरोल पेटमैन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं। कैरोल पेटमैन, मैकफर्सन भी। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी आप देख लीजिए, डेविड हेल ने दिया है। किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है? इसका कॉन्टेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड वीकनिंग ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण स्टेट वीक होती है। आज जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है जिसको आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मान सकते हैं, वो कौन सी है? स्टेट है। इसलिए इन्होंने कहा कि एक कॉस्मोपॉलिटन मॉडल डेवलप किया जाए, जिससे जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस हैं वो डेमोक्रेटिक बने। तो इस लाइट में यू कैन रीड इट। एंड यस, प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को एरन लिब्जार्ड का नाम पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि he is a very important thinker as far as the democracy is concerned. Which model? Consociational model, यानी कि consensus based, जो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी की वीकनेस को टैकल करता है। तो ये डिस्कशन से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही होगी। थैंक यू वंस अगेन।